very important story, that is Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. And in this autobiographical excerpt, Nelson Mandela says about his role to give freedom to his people, that is black people. Here in this story, rather autobiography, we will learn the early life of Nelson Mandela, his different definition of courage, freedom, love, hate, everything's, and his generosity, his kindness, his interest for the welfare of people. And we will also know that his indomitable wish to fight against white people and to give justice, to give peace, and to give a dignified status to his people, that is black people. You might have learned that it was not more than 1994. Especially the white people ruled over there for a long time, and the white skinned people started ruling over black skinned people. But it was not it was not a simple ruling. Rather, the ruling was very much hateful. So we will learn how hateful white people were there over black people, and we will know Nelson Mandela's role to liberate those cruelties, okay, and to give freedoms. And we will learn that the people were also interested in that the gathering, and then now that in a new kind of freedoms, new freedom, the country now become liberated from all kind of fear, torture, and all kind of discriminations. Finally, we will see here in this short stories, chapter starts with the oath taking ceremony, right? And now oath taking ceremony, and after that he tells about different duties of human being, and he also tells about that how did his freedom change the meaning. Okay, we will learn all these things step by steps, and ultimately we will solve all those question related question also. Okay, so I have given here that means the entire chapter is mapped here. That means the entire chapter, Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. The total chapter is put into one screen, that is called mind map here. If you have a photograph, so then all the main points will come before you in one shot, and this will be very helpful. It was 10th May. It was 10th May 1994, right? And he took oath after winning he took oath, and that's oath taking ceremony took place in the Union Building, Pretoria of South Africa. It was an amphitheater building, and how many dignitaries were invited? About 140 dignitaries were invited from 140 countries. Okay, and there were more than, you can say that a huge gathering of people. But after the winning of black people, not only black people took their oath, but white people were also invited there. So oath taking ceremony started. First oath was taken by deputy president, second deputy president Mr. D Clark, and then second जो oath take किया था बेटा वो है president, deputy president first Thabo Mbeki, okay, and finally the president Nelson Mandela took oath, okay, and his wordings, that means what he used in his oath was very important. I would like to read over here. And President Nelson Mandela took his daughter, प्यारी सी गुड़िया जैसी daughter जेनानी को लेके गए थे साथ में. Okay, so there were innumerable numbers of guests. Okay, dignitaries were there, black people were there, and white people were there, and in before them he assembled and he welcomed with a smiling face, with a kind face, and there was no differentiation, there was no discrimination, there was no hate at all against anyone. Today he was taking oath, and before him there was a in front of podium he came and says, today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty out of experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. We were outlaws not so long ago, have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world on our own soil. We thank
all of our distinguished international guests for having come to take positions with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. We have at last achieved our political emancipations. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivations, suffering, gender, and other discriminations. Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of the one by another. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. So this way he took the pledge. After that, after taking the pledge, what happened? He pledged to liberate people from the bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and discrimination. देखो आप ऐसे लर्न करो ताकि लगे कि वो किस बात पे क्या लिए थे, प्लेस किए थे, पॉवर्टी, दिस एंड दैट. And now, victory of, he told that it was the victory of peace, justice, and human dignity. Okay, and he took place that this people will be free now from this poverty. अब South Indian people को कभी ये problem नहीं हो सकती है, right? And now, just after taking the oath, there was a show of military power. Military power was shown. Okay, अभी कुछ दिन पहले नेल्सन मैंडेला कहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले पुलिस was searching him. Military people were searching him for his actions, and his action that means Nelson Mandela's action कुछ दिन पहले it was working like a rebellion, it was against the system. Okay, तो पुलिस इनको एज ए क्रिमिनल समझते थे और वही पुलिस आज इनको क्या समझ रहे हैं? They were giving salute, they were giving what? A huge honor. अब now क्या हुआ? जेट प्लेन, जैसे कि आसमान में जेट प्लेन सेट ऑफ हो गया. ओके, इन द sky a trail of different colors, and these different colors were black, red, green, blue and golden. Okay, so इस टाइप का जो ट्रेल ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड दैट फ्लैग, नेशनल फ्लैग वाज होस्टेड देयर. ओके, एंड नाउ द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग वाज देयर व्हेन दैट national anthem was sung there. तो देयर आर टू नेशनल एंथेम्स. सबसे सरप्राइजिंग बात है, ऐसा कोई मिनिस्टर, ऐसा कोई जो है लीडर कभी ऐसा नहीं करते हैं कि दैट मींस जो ओपोनेंट्स थे, जो एनिमी थे, उन लोगों का भी एग्जिस्टिंग नेशनल एंथेम को गाया गया. विनर तो दैट मींस ब्लैक पीपल अपना नेशनल एंथेम डाई स्ट्रीम तो गाया ही है, बट उसके साथ साथ जो व्हाइट पीपल अब तक रूलिंग पार्टी थे, अब तक उनका भी जो है नेशनल एंथेम गाया गया. क्या है? टू नेशनल एंथेम्स. कोशी सिकेकेल आई अफ्रीका, इट वाज बाय. सो दिस वे टू नेशनल एंथेम्स वेर संग. नाउ अब क्या कहते हैं? ही फोकस्ड ऑन हिस्ट्री. अब लोगों के सामने, पोडियम के सामने नेल्सन मैंडेला है और फिर वो देखते हैं कि वो फकर से ये कहते हैं, प्राउडिटी के साथ ये कहते हैं कि देखो आज मैं इस जगह पे हूं, आपके वोटिंग से मैं सिलेक्टेड हूं. ओके, लेकिन बट ये क्या है? क्योंकि अगर देखा जाए तो आई एम जस्ट ए सम टोटल ऑफ द प्रीवियस इफर्ट ऑफ पीपल. लोगों की इफर्ट की ही हम एक रिजल्ट है. तो ही फोकस्ड ऑन द हिस्ट्री. आफ्टर एंग्लो-बोअर वॉर, white people erected a system, and that system was a racial dominations. One race dominate others. That means यहाँ पे white people started dominating others, and it was the harshest and it was the most inhuman practice in the history of human civilizations in the world. It was called apartheid. White skinned people started dominating and showing cruelty over black skinned people. Okay, now he recognized. That means he also identified the value of whom? He also identified the value of those freedom fighters, patriots, for their sacrifice. Thousands and thousands patriots sacrificed their life. They were popular for their courage. जो लोग बीत गए, जो लोग मार्टियर्स हो गए, they were popular for their courage, not to be repeat. और उन लोगों की करेज को कभी हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं? क्षतिपूर्ति नहीं दे सकते हैं. And he is telling that जनाब Nelson Mandela is rather a sum total of their effort. Okay, now he also tells that ये जो racial discrimination, ये जो torture एक deep and lasting wound हम लोगों के दिल दिमाग में create कर रखा है. क्या है? Created to people. These persons fought against this, but Nelson Mandela says, मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहता हूं जो कि इस सिस्टम के खिलाफ, इस व्हाइट लोगों के खिलाफ बहुत वॉर किए हैं, बट दे कुड नॉट वोन. एंड दैट वेयर दैट Oliver Tambo, Walter Sisulu, and Chief Lithule, okay, and Yusuf Dadu. All these persons were very much popular for their courage, wisdom, and generosity.
नाउ उन्होंने एक बात कहा, देखो ह्यूमन बीइंग का दो ऑब्लिगेशन है, दो ड्यूटी है। एक ड्यूटी तो वो है दैट मींस ही शोज हिज ड्यूटी टू हुम, हिज फैमिली मेंबर्स, हिज पेरेंट्स, हिज वाइफ एंड हिज चिल्ड्रन। और दूसरा ड्यूटी है टू हिज पीपल, टू हिज कम्युनिटी एंड टू हिज कंट्री। ओके, तो ह्यूमन का दो ड्यूटी है। ओके, नाउ ही ऑल्सो टेल्स दैट करेज, करेज का मीनिंग ये नहीं है, करेज डजंट मीन्स वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। करेज का मतलब एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, बट करेज का मतलब होता है फियर को जीतना, वो करेज है। द वे टू ओवरकम फियर मीन्स करेज। ओके, ट्रम्प मीन्स विक्ट्री। डन। नाउ अब यहाँ पे लास्ट में आके वो कहते हैं कि देखो our country, that means South Africa is rich country with minerals, gems and this and that, बहुत सारे, but according to Nelson Mandela human beings are gems। और वो उस जेम को, that means he thought about the importance and the dignity of human beings, और उसके लिए उन्होंने क्या किया, he started fighting against the injustice, he started fighting against the what, against so called inequality। so ही सेज मैं बचपन से ही आई वॉज बोर्न फ्री। लेकिन उसका जो फ्रीडम है, फ्रीडम का डिफरेंट मीनिंग है। फ्रीडम का डिफरेंट मीनिंग क्या है? जब वो बचपन में थे तो फ्रीडम का मतलब वो समझते थे क्या है, फ्रीडम मीन्स टू रन इन द फील्ड, खुल्लम खुल्ला दौड़ना कूदना फील्ड में। वो फ्रीडम का मतलब बचपन में ये समझते थे स्विमिंग इन द स्ट्रीम, नदी में, पोखरा में। हाँ, और वो समझते थे राइड ऑन द बुल या भैंस के पीठ में बैठ के जो है घूमना। और फिर जब वो यंगस्टर्स हुए तो यंगस्टर्स होने के बाद वो समझते थे कि दैट मींस फ्रीडम का मतलब है स्टे आउट एट नाइट फ्रीली, कोई रोके ना, कोई टोके ना। रीड बुक्स ऑफ हिज ओन चॉइसेस, उनके ऊपर कोई दबाव ना डाले, जो चाहे वो पढ़ सकता है। टू अचीव और टू अचीव द स्टेटस ऑफ अर्निंग, टू अचीव द स्टेटस ऑफ मैरिंग एंड टू हैव ए फैमिली, वो ये समझते थे कि इसका मीनिंग ये है। फिर धीरे धीरे जब जो है वो और थोड़ा सा आगे बढ़े यंगस्टर्स में, अब धीरे धीरे लोगों की दैट मींस दर्द को वो फील करने लगे, लोगों की प्रॉब्लम को, ऑपरेशन को उसने फील करने लगा। जब फील करने लगा तो फिर जो है 30 इयर्स उनको प्रिजन में डाल दिया गया था, राइट। एंड नाउ ही वांटेड फ्रीडम, फाइनली ही वांटेड फ्रीडम फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर हिज कंट्रीमैन, एंड इट बिकेम्स एन इंडोमिटेबल विल, जो विल को कोई डोमिनेट नहीं कर पाए। सो दिस वे वी हैव लर्न दैट इसमें नेल्सन मैंडेला इस तरह बता रहे हैं कि कैसे कैसे उन्होंने विन किया, कैसे प्लेस लिया। एंड नाउ दीज आर सम ऑफ दैट द वर्ड मीनिंग, दीज आर सम ऑफ द वर्ड मीनिंग। इमांसिपेशन मीन्स फ्रीडम, प्रिसिजन मीन्स एग्जैक्ट, बीटेक मीन्स डेकोरेटेड, चिल्ड्रन। ओके, दीज आर सम different word meanings. He tells one more word, very important word, that people must hate, people must learn to hate others। ये दोनों क्वालिटी है, दैट मींस किसी को हेट करना और किसी को प्यार करना। तो दोनों में अगर देखा जाए तो हेट करना लोगों को सीखना होता है, और प्यार करने के लिए लोगों को सिखाने की जरूरत नहीं होती, ना सीखना पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली कम्स। तो दोनों क्वालिटी अगर ह्यूमन बीइंग का दोनों क्वालिटी अगर लिया जाए तो देखा जाएगा कि जो हेट क्वालिटी है, हेटिंग करना है, तो ये पीपल को लर्न करना पड़ता है, और love comes to people naturally। So he wants to spread, indirectly he wants to spread what? He wants to spread love, generosity, his kindness। And now finally he wishes that once emancipation is over, once we got liberations, और हम यही चाहते हैं कि अब फिर दोबारा ऐसा डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा बॉन्डेज कभी ना आए, इस कंट्री में कभी ना आए। आ जाओ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या ले सकते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर क्वेश्चन देखा जाए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है। देखो, वेयर डिड द सेरेमनी टुक प्लेस? सेरेमनी टुक प्लेस इन दैट यूनियन बिल्डिंग, प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका। ऑन व्हिच डेट, ये भी मेंशन कर सकते हो। कैन यू से that how 10th May is an autumn day in South Africa? 10th May is an important day in South Africa। 10th May एक बहुत important day, it was the celebration of their glorified liberation, the day of freedom, the day of joy, the day of celebrations। Because on that day क्या हुआ? On that day they established their supremacy। Their supremacy means no white people can torture anymore। Okay, so it was a very happiest day। अच्छा, what do military general do to whom? What do military general do to the generals? The military generals salute and place their loyalty in front of Nelson Mandela। Okay, the general that means Nelson Mandela remembers कर रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले यही लोग, यही पुलिसमैन हमें क्रिमिनल समझते थे, और मेरी वॉइस, मेरी वर्ड्स को क्या समझते थे? रिविलियन समझते थे। बट टुडे जब मेरे सामने वो लोग आके सैल्यूट किए, it was a great honor for me। Okay, now why were the two national anthem sung? It was the celebration day, तो celebration हो तो सभी लोग participate करें।
It was a celebration day, so he thought that everybody should participate and there should be the rainbow colors. There should be the rainbow colors. All the dignified person must be there. So जो लोग अभी रूलिंग पार्टी कुछ दिन पहले रूलिंग पार्टी थे उन लोगों का भी जो है क्या गाया जाएगा, नेशनल एंथम गाया जाएगा और उन लोगों की एडमिशन ऑफ ब्लैक पीपल का भी नेशनल एंथम गाया जाएगा. ओके तो किस लिए? इट वाज फॉर दैट it was for spreading generosity. Okay, now the next question, what was the courage mean to Mandela? देखो courage का मीनिंग यहाँ पे दिया है. Courage doesn't means that absence of fear, but the triumph over it, the victory over it. Okay, and now what else? Nelson Mandela कैसे जो patriots को salute दिए, patriots को बेटा क्या दिए? How did Nelson Mandela saluted or recognize the value of patriot? He thinks Nelson Mandela recognized the unmatched sacrifices of thousand popular patriots. For those patriots had sacrificed their life and they had been popular for courage. Okay, so he also said that he is just a sum total of their effort. Okay, और इसी तरह बेटा जो है some questions जो भी क्वेश्चन है I hope कि you will solve, there will be no trouble. ठीक है, thank you.